ज़ीलर्न के नतीजे मैं बता दूं, हमारी ग्रुप समूह की कंपनी है और नतीजे काफ़ी शानदार पोस्ट किए। उस पर बात करने के लिए मैनेजमेंट मेरे साथ मौजूद हैं। देवशंकर मुखोपाध्याय साहब इसमें मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ीलर्न के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय ज़ीबीएस इसको देने के लिए। ये तो टॉप लाइन की बात करें या फिर एबिटा या फिर बॉटम लाइन फ्रंट पे, स्टैंड अलोन फ्रंट पे Q4 में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन शो कर दिया है कंपनी ने। की हाईलाइट्स अगर आप बता पाएँ तो। Well, first of all, thank you for the opportunity. We have posted fantastic results. Our consolidated revenue for a year is at 1789 million, which is an all-time high. Kidzee, which is a brand, has crossed the 1 billion plus mark. Our consolidated operating EBITDA as a percentage of revenue have reached 35% against 29% of last year. And that consolidated PAT is 366 million against 150 million, which is almost 2.4x. And the EPS is 113% of the face value. So these are the key highlights of our performance for the last financial year. लेकिन सर स्पेसिफिकली मैं किड्जी ब्रांड का प्रदर्शन जानना चाहूँगा। 100 करोड़ के पार FY17 के रेवेन्यूज पहुँचते हुए नजर आए। गोइंग फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी कैसे लगती है आपको? Well, in our minds, Kidzee has just about started its journey of growth. With over 10% of India's population in the 0 to 6 years age bracket, the potential for this amazing brand is significant. We are currently present in over 600 cities and towns, and we continue to penetrate deeper in cities where we have presence, and also in terms of exploring new markets. As I see it, Kidzee will also, which is also the Asia's largest preschool chain, will continue to improve its penetration across India and elsewhere, while we look at introducing newer products and revenue lines to improve our throughput from this vast network. We have a triple S strategy, which is working remarkably well, and we shall continue to drive it across the network. We are also looking at opportunities to improve our capability in terms of digital offerings, which are increasingly becoming much sought after in our network, and will open up new avenues of growth for us as we go forward. सर यही मेरा प्रश्न था कि नेटवर्क और प्रेजेंस को कहाँ पर किन टेरिटरीज में अब कंपनी टारगेट कर रही है, कहाँ पर एक्सपेंशन करने की योजना है? So currently we are present in 600 cities across the country. We will continue to penetrate deeper in those cities and also open up newer locations, which is confined not only to India, but also to our neighboring countries, predominantly Nepal and Bangladesh. We are exploring opportunities in those newer geographies too. सर अब बिजनेस सेगमेंट्स को और बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ नए मॉड्यूल्स जो हैं वो कंपनी और डिजाइन कर रही है? Yeah, so predominantly we run a very asset-light model, which is run by the franchisee network. What we predominantly do is that to ensure that more and more educated women start an enterprise that makes them financially independent, and while also making them a greater part of the education ecosystem. Currently, we are focusing on technology, and digital will play a very important role, not only going forward, but also has an important role as I speak to you today. चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड जो ग्रोथ प्लान्स हैं उस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स ज़ीलर्न ने जो पेश किए हैं, अब फिलहाल 47-45 के लेवल पे कामकाज कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन एबिटा फ्रंट पे देख लीजिए या फिर आप पैट फ्रंट पे या फिर टॉप लाइन फ्रंट पे, तीनों ही फ्रंट पे Q4 में स्टैंडअलोन बेसिस पे और FY17 पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं वो ज़ीलर्न पेश कर चुका है। लेकिन CI एनुअल समिट है आज और उसमें सेबी चेयरमैन अजय त्यागी साहब, आइए सुना देते हैं आपको किससे में वो क्या कह रहे हैं। That doesn't appear to be immediate cause of worry. On domestic side, constant push for reforms by this government. The last 3 years, they are bearing the fruit. Big ticket economic reforms, GST rollout, as per schedule, last year's bankruptcy code, I already said, direct benefit transfer through Aadhaar enabled through legislation and amendments in the Companies Act and SARFAESI Act as improvement of ease of doing business and for improving the recovery of bank dues. More than this, what is required is procedural simplification. That actually is an ongoing process, and many times
perhaps nuts and bolts and procedural simplifications are more important than the policy issues, and they are being done, and they're being done in SEBI too. Now, some of the things which we intend doing in near future, we intend focusing in SEBI on primary markets more, because in terms of the new investments to bring to the companies so that they're invested in infrastructure and other areas, we want to focus on this. We want to have further reforms in IPOs and corporate bond market. I already said we'll try to reduce the listing time, mutual fund. One other issue is this InvITs rates and municipal bonds, for which we have been trying for the last 2-3 years that they really succeed. I think InvITs definitely are going to come, at least 2-3 InvITs in the coming month. And for the municipal bond also, we have relaxed the accounting norms for the last year, and we were promised that at least 3 municipalities will soon raise these bonds. So once this channel of investment starts, this will be a big boost of alternative channel for investment, which we are looking eagerly for. Another item is this, Mr. Puri mentioned about FMC getting merged with SEBI. That was merged about 1.5 years back. And that synergy we are working at, that is a very important and priority item for SEBI. इंसॉल्वेंसी कोड से बॉन्ड मार्केट मजबूत होगा, इनवीट्स कंपनियां लाने वाली हैं और 3 इनवीट्स तो अब जल्द ही आ जाएंगे। तो ये बड़ी स्टेटमेंट्स थी जो इस समय सेबी चेयरमैन ने बोली। लेकिन एक स्टॉक देखिए आप, IFCI, आज एक्शन है इस स्टॉक पे और बाहुबली स्टॉक FNO का साबित हो रहा है। 11% की तेजी IFCI पे बन चुकी है। सुमित, एक बार स्टॉक देख के बताएं सर, ये मोमेंटम अभी शुरू ही हुआ है क्या, और ये अभी तेजी और पकड़ सकता है? बहुत समय बाद इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यस, एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही कहा। बहुत समय के बाद ये स्टॉक के अंदर ऐसा मूव हमको देखने को मिला है और आज सिंगल डे में ये स्टॉक ने ऐसा मूव दिखाया है। ब्रेकआउट तो है स्टॉक के अंदर, ऊपर में 35 से 38 रुपए तक के लेवल्स तो बनते हैं। अब ये देखना है कि ये ब्रेकआउट जो आज मिला है ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अगर ये सस्टेन किया तो 35 से 80 रुपए के लेवल्स तो आप 35 से 38 रुपए के लेवल्स तो आप मान के चले हमको जल्दी ही IFCI के अंदर देखने को मिलेंगे। तो काउंटर स्ट्रॉन्ग है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए और फ्रेश बाय थोड़ा सा यहाँ से डिप मिलता है तो करनी चाहिए।